वेलकम टू अलमास जेकब लाइव। मैं हूं अलमास जेकब और आप देख रहे हैं एवरीवन नीड्स टू वॉच दिस, दे जस्ट सेड इट। कभी आपने सोचा है कि हमारी दुनिया के हालात ठीक होने के बजाय मजीद ख़राब ही क्यों होते जा रहे हैं? क्या किसी चीज़ का कोई सोल्यूशन नहीं है? कोई समझ नहीं आ रही? हुकूमत क्यों जो है वो नाअहली की तरफ ही जा रही है? कुछ भी सही काम क्यों नहीं कर रही है? अगर आपने नोट किया हो तो टीवी के ऊपर जो न्यूज़ एंकर्स होते हैं अक्सर वो इतनी अच्छी अच्छी रिपोर्ट्स बनाकर पूरी रिसर्च बेस्ड रिपोर्ट्स लेके आते हैं कि किस तरह हमारा मुल्क कर्ज़ों में से निकल सकता है, क्या अगर हम कर लें तो उससे ये फ़ायदा होगा, इस तरह की अगर हम चीज़ चला लें तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इतनी रिपोर्ट्स लेके आते हैं लेकिन उसके बावजूद हुकूमत के कान के ऊपर जूं तक रेंगती नहीं है। क्यों नहीं होता है ऐसा? उसकी रीजन ये है, आप जरा ये क्लिप देखें। Now names like Mrs. Merkel, even Vladimir Putin and so on, they all have been young global leaders of the World Economic Forum. Mm-hmm. But what we are very proud of now is the young generation, like Prime Minister Trudeau, President of Argentina and so on, that we penetrate the cabinets. So yesterday I was at a reception for Prime Minister Trudeau, and I know that half of this cabinet, or even more half of this cabinet, are for our actually young global leaders of the World Economic Forum. That's true in Argentina as well. It's true in Argentina, and it's true in France now. Mm-hmm. I'm with the president, who is a young global leader. जी तो जीजो, आपने देखा कि क्लॉस श्वाब अपने मुंह से कह रहा था, वो बता रहा था कि व्लादिमीर पुतिन हो, चाहे कनाडा का प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो हो, चाहे अर्जेंटीना की हुकूमत हो, इन सब को हमने ग्रूम किया। इनके तो इसने नाम ले लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरी दुनिया के अंदर इनका कंट्रोल है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, और इसी प्लेटफॉर्म से इनको ग्रूम करके फिर इन स्टेजेस पर लाकर इनको बिठाया जाता है, इनसे काम लिया जाता है। यही वजह है कि आज दुनिया के हालात बेहतर होने के बजाय ख़राब से ख़राब होते जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने क्योस लेके आना है। पहले क्योस आएगा, कोई सोल्यूशन नज़र नहीं आ रहा होगा। जब ये सोल्यूशन पेश करेंगे तो सारे लोग कहेंगे ठीक है, बस दुनिया को ठीक करो, किसी तरह से जो कहते हो कर लो, बस हमें नहीं पता, बस दुनिया जो है ना वापस सही हो जानी चाहिए। पुतिन रशिया का प्रेसिडेंट, आप देख सकते हैं कि वहां पर वो क्या कर रहा है। उसकी वजह से, जो उसने जंग शुरू की हुई है उसकी वजह से आगे पूरी दुनिया में, वैसे तो ये नॉनसेंस सी बात लगती है कि पूरी दुनिया के अंदर फूड शॉर्टेज इस वजह से आ रहा है कि जी वहां पर जंग हो रही है, लेकिन फिर भी आप समझ सकते हैं कि जानबूझकर ये भी एक हिस्सा है जिससे इन्होंने बैंक अकाउंट्स लोगों के फ्रीज किए, आपको पता है। और उसके अलावा इन्होंने जो दुनिया के अंदर अभी तमाशा लगाया हुआ है कि जी क्लाइमेट ये हो रहा है, वो हो रहा है, और उसके बाद इन्होंने क्या किया है कि उससे फूड शॉर्टेज लाने वाले हैं। अब आप नोट करें कि रिडिकुलस बात लगती है कि कनाडा के अंदर जो ट्रूडो है वो भी फार्मर्स के पीछे लगा हुआ है कि जी फसलें इस तरह से नहीं, इस तरह से उगाओ, नहीं तो हम उगाने नहीं देंगे क्योंकि मौसमी तब्दीली आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। फिर आप देख सकते हैं इसके अलावा पूरी दुनिया में एक ही चीज़ को क्यों लोग फॉलो करते जा रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि इन्होंने अपने बंदे बैठाए हुए हैं, इन्होंने इनको ग्रूम किया है। इन ग्रूमिंग का मतलब होता है इनको तालीम दे के फिर इनको सीट पर बिठाया है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपको पता हो, प्रेसिडेंट मंगूफली थे जो कि तंजानिया के प्रेसिडेंट थे। अगर आपको याद हो तो उनको मार दिया गया था। वो बेसिकली अब वो इस दुनिया में नहीं है। उनके बारे में कहा जा रहा था कि इससे पहले कि उनकी जान जाती, उससे पहले 3 हफ्ते तक वो मुल्क से ही गायब थे। वो कहाँ गए किसी को नहीं पता था। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जो लोग भी इनके खिलाफ जाते हैं उनको ये हटाकर उनकी जगह अपने लोग लाकर बिठाते हैं। अब आप देख लें कि तंजानिया में आपको कुछ भी वैसा होता हुआ नजर नहीं आएगा जो कि प्रेसिडेंट मंगूफली कर रहे थे। अब इनका मेन प्लान क्या है? इनका मेन प्लान है लोगों को कम्युनिज्म की तरफ लेके आना, कैपिटलिज्म को खत्म करके कम्युनिज्म लगाना है। और कम्युनिज्म कभी भी फ्रीडम नहीं रहा है, ये अच्छी तरह से लोग जानते हैं जो कि सोवियत यूनियन के बारे में जानते हैं। वो अच्छी तरह से जानते हैं कि ये स्लेवरी है, ये बेसिकली गुलामी है, और हुकूमत की गुलामी। इसके बारे में आप कुछ भी नहीं बोल सकते। अगर आप कुछ भी बोलेंगे तो आपको ना सिर्फ शर्मिंदा किया जाएगा पब्लिकली, बल्कि आपसे राइट ले लिया जाएगा कि आप रोटी नहीं खा सकते। लिटरली आपको जो है ना रोटी नहीं खाने दी जाएगी, आपको रहने नहीं दिया जाएगा, आपको आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी जाएगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ बेसिकली कि कम्युनिज्म लाना इनका अवलीन तरजीह। आप देख सकते हैं कि चाइना को ये अक्सर न्यूज़ में कहते हैं कि जी चाइना जो है ये कर रहा है, वो कर रहा है, चाइना के अंदर हालात ऐसे वैसे हैं, लेकिन अब ये अपने मुंह से खुद कह रहे
रहे हैं कि चाइना जैसी फ्री कंट्री दुनिया में कहीं नहीं है। आप जरा ये क्लिप देखें। Still support the one China policy. We go there to acknowledge the status quo is what our policy is. There was nothing disruptive about that. It was only about saying China is one of the freest societies in the world. Don't take it from me. That's from Freedom House. Let's talk a little bit. Democracy, courageous people. Trudeau's meeting last week with a group of Toronto women was an example. Even with Sun TV watching for any slip, he was asked which country he most admired and referred to China. There's a level of admiration I actually have for China because their basic dictatorship is allowing them to actually turn their economy around on a dime and say we need to go green as fastest. We need to start, investing in solar. I mean, there is a flexibility that I know Stephen Harper must dream about of having a dictatorship that he could do everything he wanted. That I find quite interesting. We are coming out, thanks also to the leadership of China in terms of fighting the pandemic, in terms of reinvigorating its economy. We have now a window of opportunity to create this global reset which we all need. This global reset is necessary because we have seen that our policies which we pursued before the coronavirus struck us, that those policies do not create the necessary inclusion of society necessary for harmonious societal development. And they do not create the sustainability of what we are doing. Just think of the global warming, how fast it is developing in the opposite, into the negative direction. So we have a great opportunity at this moment, like we had after World War II, to have in some way a new beginning in our global cooperation, in globalization, in managing our global affairs. I hope that we will not miss this opportunity. अब अचानक से ट्रूडो को चाइना क्यों पसंद आ गया, अचानक से अमेरिका को क्यों पसंद आ गया है चाइना? पहले तो अमेरिका उसके ऊपर सैंक्शंस लगा रहा था, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, लेकिन अब अमेरिका एकदम से उसका दीवाना क्यों हो गया? उसकी रीज़न ये है कि चाइना के अंदर जो सिस्टम लगाया गया वही ये पूरी दुनिया में लगाने वाले हैं। चाइना को इन्होंने मॉडल बनाकर सामने रखा हुआ है कि भाई अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो जैसे चाइना करता है अपने लोगों को, अगर थोड़ी सी भी अगर कोई गलती करता है तो उनके मुंह पे चपेड़ लगाई जाती है, सरेआम उनको जलील किया जाता है और उठा के ले जाती है पुलिस आपके घर से अगर आप हुकूमत के खिलाफ कुछ भी बोलते हैं। तो वही सारा कुछ जो है अब ये लागू करना चाहते हैं इस पूरे वर्ल्ड के अंदर, एक ही सिस्टम को, जो कि कम्युनिज्म वाला वो सोशल क्रेडिट सिस्टम स्कोर मैं आपको बता चुका हूँ इसके बारे में। मजीद इनके पास हमारे लिए सोल्यूशंस क्या हैं? ये जो अब वर्ल्ड लीडर्स ग्रूम करते हैं, क्या सोल्यूशंस लेके आ रहे हैं कि आप कीड़े खाएं? आप जरा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ये वीडियो देखें। It takes a fraction of the resources to grow a pound of crickets as it does a pound of beef. And so the amount of water it takes, the greenhouse gas emissions that it emits compared to livestock, the amount of land that's required, the amount of feed that's required, there are so many factors that just lead to, this is kind of smart. And as a chef, the
most important thing for me when I serve my food is that it tastes delicious. It has to taste good. And so I have to stand behind everything that I serve. So if I taste something and it doesn't taste right, then I'm not going to serve it. I mean, that never happens, thankfully, but but you know, that's part of the great challenge and the creative mission for me is how do I take something that people don't perceive as food and make it crave-worthy, make it something so that people will go like, man, I never thought I would want to eat insects, but looking at his food, I really want to try it. जी, तो आपने देखा कि ये सॉल्यूशंस हैं इनके पास हमारे लिए। और ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये किसी सूरत भी इस दुनिया की भलाई नहीं चाहते हैं। ये एक एजेंडा के ऊपर काम कर रहे हैं जो कि लूसीफेरियन एजेंडा है। और मैं आपको बता चुका हूँ कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ये क्लास शवाब जो है ये रोथस्चाइल्ड है। और रोथस्चाइल्ड इल्यूमिनाटी के 13 खानदानों में से एक खानदान है जो कि बरतानिया को कंट्रोल करता है और पूरे यूरोप को कंट्रोल करता है। और रॉकेफेलर खानदान जो है वो अमेरिका को कंट्रोल करता है। वेस्ट साइड जितनी भी है उसको कंट्रोल करता है रॉकेफेलर खानदान। और इसी तरह रोथस्चाइल्ड जो है वो यूरोप को कंट्रोल करता है। इसी तरह और खानदान है जो कि एशिया को कंट्रोल करते हैं, जैसे ली फैमिली है जो कि चाइना को कंट्रोल करती है और जितनी एशियन कंट्रीज हैं आसपास की उनको कंट्रोल करती है। तो बताने का मकसद ये है कि ये वजह है कि हमारे हालात बेहतर होने के बजाय खराब हो रहे हैं। तो अगर आप इनसे निपटना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ऐसा हरगिज ना हो जैसा चाइना में हो रहा है, तो उसके लिए आपको अवेयरनेस देनी होगी, लोगों को बताना होगा ताकि लोग अपने हक के लिए बोलें, लोग सवाल करें। जब तक आप सवाल नहीं करेंगे, जब तक आप पूछेंगे नहीं, ये होगा और ये सबके साथ होगा, फिर चाहे जो किसी भी लेवल का हो। क्योंकि खुदा का कलाम बताता है कि हर बड़े छोटे, आज़ाद गुलाम, अमीर गरीब, अमीर ये मत सोचे कि जी मेरे ऊपर नहीं होगा, ऐसा ही होगा। क्यों? क्योंकि खुदा का कलाम बता रहा है कि ये मुखालफे मसीह का दौर है जिसमें मुखालफे मसीह ने बस सामने आना है और उसके बाद उसने 7 साल तक इस ज़मीन के ऊपर अपनी बादशाहत करनी है, जो कि दुनिया की वैश्याना तरीन सबसे बुरी बादशाहत अगर होगी तो वो मुखालफे मसीह की होगी। तो ऐसे में अगर आप इससे बचना चाहते हैं, ग्रेट रीसेट को रोकना चाहते हैं, तो इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।